ऐसा क्या है मनुष्य के स्वभाव में कि एक चमत्कार, एक आश्चर्य कर्म हम देख लेते हैं, एक आशीष मेरे जीवन में आती है और मेरा जो उसका पीछा करना है वो तृप्त हो जाता है। मैं बोलता हूं बस हो गया। उन 20,000 में एक ऐसा नहीं था जो ये कहता कि जिसने बिना मांगे मुझको, सिर्फ मुझको नहीं, मेरे साथ के इन 20,000 लोगों को इस रेगिस्तान में खाना खिलाया, वो मेरे लिए और क्या क्या करेगा। My expectation, my understanding limits God, because God wants to do so many things. परमेश्वर को बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन वो रुकता है कि इसे एक बार प्रकाशन मिले तो मैं दिखाऊं। बट वो प्रकाशन मुझे कब मिलेगा? जब मैं पीछा करूंगा। When I pursue, when I pursue. If Abraham would have not taken Isaac to the mountain, he would have never known Jehovah Jireh. अगर वो उस पर्वत पर नहीं गया तो उसको कभी भी यहोवा जायरा पता नहीं चलता उसको। My pursuit, my willingness to pursue him. Imagine 20,000 लोग ने खाना खाया, राइट? यीशु मसीह ने चेलों को नाव पे चढ़ा के भेज दिया। जो लोग उधर आए, मतलब पानी नजदीक था, उन लोग भी पहाड़ के पास उसी पानी में से आए रहेंगे ना। अगर वहां पर नाव मौजूद थी 12 लोगों के लिए, तो बाकी लोगों के लिए भी होगी। शायद 20,000 लोगों के लिए नहीं होती, मगर 2 लोगों के लिए तो होती। एटलीस्ट 2 more people. But you know what? Nobody did. Listen, you know what they thought? Jesus only asked the disciples. हाँ, यीशु मसीह ने खाली ना 12 चेलों को बोला, तुमको किसने रोका है? Bible says he pushed the 12. उसने जबरदस्ती 12 को नाव पर चढ़ा दिया, बोले जाओ दूसरी तरफ। कहीं ये नहीं लिखा कि उसने बाकी 20,000 को मना किया। उसने 12 को चढ़ा दिया, वो खुद पहाड़ पर चढ़ गया। तो जो लोग यीशु को ढूंढते ढूंढते आए थे, अचानक वो नहीं थे। या जब यीशु मसीह ने दूर से देखा, बाइबल सेज he saw from the far distance that there was a storm and the disciples were struggling. So when Jesus started walking on the water, all these fellows who had eaten bread, they just sat there and said, let's see what is happening now. But there was one man who said, if he can walk on water, I can as well. Just because, see, he will not spell everything out for you. वो हर चीज तुमको ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के नहीं देगा। अगर तुम्हारी अपेक्षा है, यीशु ने पतरस को बोला, पतरस आ। पहले नहीं किसी ने सोचा था कि आदमी कभी पानी पे चलेगा? पहले कभी हुआ था? पहले जब पानी आया तो उसने पानी शिफ्ट किया था, वो एक लेवल था, है कि नहीं? ये एक लेवल है। वो पानी शिफ्ट करने का भी 2 अलग अलग तरीके से हो गया। एक बार मूसा को हाथ उठाना पड़ा, दूसरे बार इलाइशा ने उसका मैंटल फेंक के मारा। एक बार समंदर अलग हो गया, एक बार नदी अलग हो गया, दोनों लेवल। सो एवरीबॉडी थॉट ऐसी कुछ होगा। पता है जीसस है ना, अभी ये देखो वो तूफान दिख रहा है, यीशु मसीह ऐसी कुछ करेंगे, बट यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया नहीं। अरे I'll tell you what happened. उन्होंने बोला
What they thought is, अगर पानी अलग होता और नाव अपने आप सूखे जमीन पे आए तो क्या मजा आता था ना. वैसा नहीं हुआ. अरे वैसा नहीं किया. When they were discussing कि उनके हिसाब से नहीं हुआ, there was somebody who saw Jesus and he started thinking, is he really walking on water? Really? So, if that is really my master and he is walking on water, coming to me, what stops me from doing the same? Listen, if somebody is laying a claim on a miracle and receiving it, what stops you from doing the same? If there was a woman who said, I don't care if they stone me to death, I am going to get into the crowd, I will touch the hem of his garment, I don't need him to pray for me, I will get my miracle, I am not going empty-handed now. What is stopping you and me from doing the same? It is the lack of our understanding. For so many of us, some of my sons, they come and ask me very instant specific questions. But what we don't understand, the kingdom of God is governed not by instances, but by principles. So I have to tell them, listen, last time I told you this. That applies to this also. No, listen, use a little. Thoda. Principles. Show me one person who wanted to see Jesus and did not see Jesus. One person. There was this old man, Simon, when Jesus was born. He was waiting for the kingdom of God. He saw Jesus as a baby and then he died because he wanted to see the Savior. Remember that? I don't know how old was he, but he waited till he became this shriveled up old man. And the Bible says the Lord kept him. The Lord kept him. If the Lord knows his desire, पता नहीं उसके अंदर वो इच्छा कि मुझको मसीहा को देखना है कब से थी. यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे. और बाइबल कहती है ताकि वो प्रभु को देख सके. यीशु मसीह जल्दी नहीं आए, प्रभु ने उसकी उम्र बढ़ाई. It all depends on my pursuit and how desperate I am. If my pursuit is one miracle, then you're done. Please go back home. Pack your bags, go home. That is why, I'll tell you why. A lot of people will not like this. Pastors will not like this. You know why more than 200? How many of you know in the city, around the world, average church size is 200? Average 200 के ऊपर चर्च जाता नहीं. कितना मेहनत कर करके 200, 150, 100, उसके ऊपर नहीं जाएगा. क्यों पता है? 100 लोग, ट्रिपल डिजिट चला गया. थैंक यू जीसस. मिनिस्ट्री कामयाब हो गया. वो उससे ज्यादा बढ़ता नहीं. क्यों पता है? सेटिस्फैक्शन आ जाता है. सेटिस्फैक्शन हो जाता है. हे, डोंट बी सेटिस्फाइड. Don't be satisfied. What are we satisfied about? वो 200 होने के लिए तुमने क्या क्या किया? तुमने उपवास किया, तुमने प्रार्थना किया, तुमने इवेंजलिज्म किया, तुमने ट्रेनिंग किया, सब किया.
200 हो गया था। क्या हो गया ब्रदर? यीशु मसीह ने 5 रोटी, बोल 5 रोटी 20,000 लोग खाया। मालूम तेको? क्या बात कर रहा है? 5 रोटी, वो भी बच्चे का टिफिन था, वो 3 दिन से लेके घूम रहा था, लेकिन हम लोग खाया तो एकदम फ्रेश था। सच्ची। हाँ, उसके बाद यीशु मसीह चला गया, तूफान आ गया, फिर तू गया नहीं। पागल है क्या? तूफान में कौन जाएगा? अगर किसी के पास थोड़ा अक्ल होता 100 ग्राम, तो वो उस तरफ जाते, और जब वो उस तरफ जाते तो उनको एक आदमी नजर आता जो कब्रों के बीच रहता था, जिसके हाथ पांव वो लोग चेन से बांध के रखते थे। They couldn't contain him because there was a legion inside of him. And the same Jesus who could feed a legion now is casting a legion out. Ay, 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 ay. Are you there with me? Same Jesus who fed 20,000 people now is casting out 2,000 demons or more out of one man. See, if they would have pursued Jesus, अगर एक आदमी भी 12 चेलों के साथ जुड़ के एक 13वां आदमी चला गया होता, उसकी समझ क्या बढ़ती पता है? कि भले ही मैं एक टाइम पे सिर्फ इतना खाना खा सकता हूं, लेकिन मेरा आत्मा इस कैपेसिटी में बढ़ सकता है कि यहां अंदर एक नहीं 20,000 लोगों, 2,000 लोगों का कैपेसिटी है। your body it can hold 2,000 demons and maybe more, but they were satisfied with roti and machli. एक चमत्कार मिल गया, एक अद्भुत काम हो गया, एक प्रमोशन मिल गया, satisfied. But Jesus wants to expand our understanding. He wants to expand our understanding of who He is, of who we are, what our capacity is, and what all He can do. Amen. So He can pick up a Peter and say, who's failed? I tried all night, he said, Lord. I tried all night. I don't have nothing to show forth for all my effort. You know, so many times हम कहते हैं ना, बहुत मेहनत किया मगर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। होता है, बहुत मेहनत किया मैंने मगर दिखाने को कुछ नहीं। All I have is my failure. Can you do something with my failure? Can I give you an offering of my failure? If we put a little mind to it, what Peter did was actually built an altar and said, God, I have nothing else. I have an empty boat. I have this net that I am washing to pack it away. My day is a failure. Can I give you my failure? Can I give you my failure? Can I give you my failure? You think your altars are supposed to be money? Hey, God doesn't need your money. See, what he would have done is, Peter on that day, पतरस उस दिन क्या करता मालूम? इससे पहले कि लोग आके पूछते कि पतरस कितना मच्छी पकड़ा, आज कितने का बिजनेस करेगा, बिफोर मार्केट जाने से पहले, मार्केट का गर्दी लगने से पहले, मैं जल्दी से मेरा जाल धोएगा, चुपचाप बोट पार्क करेगा, कोई पूछने से पहले मैं चला जाएगा। Can I give you some wisdom? Let me open your eyes to something. Listen, you know what people hide more than their money? Their failures.
talking to somebody? You know what people hide more than their money? Their failure. They don't want anybody to know. Peter would have thought, इससे पहले के कोई पूछे कि कितना पकड़ा, कितना बिजनेस, कितना क्या, मैं निकल जाएगा चुपचाप. पतरस जाल धो रहा है, उतने में यीशु मसीह आते बोलते हैं, पीटर बोट फ्री है क्या? It's like, वो यीशु मसीह को जानता नहीं था. जानता था क्या? नहीं. वो उसका भाई एक बार बोला था, पता है, हम जॉन द बैप्टिस्ट के टाइम पे उधर था जेकब, तो यीशु मसीह बोले जो भी है मेरे को क्या मालूम, एक तो मैं फेल हुआ है आज, मेरा नाव एम्प्टी है, ऊपर सीधा मेरे को क्या टॉन्ट मार रहे हो आके. See, before Jesus pulls you out of your failure, He will show you your failure. Not to put you down. We need to recognize our failure first. And then He tells you, I have the capacity to pull you out of this. So He's like, can I borrow your boat for a little while? Can I borrow your boat? He's like, hey, I wanted to go home chup chap and I just wanted to sleep. You know, I don't, why Jesus? Why? And then Jesus sits there and He preaches. हाँ? यीशु मसीह कहाँ बैठ के प्रीच करते? उसके खाली नाव में. तो अभी जितने लोगों से पतरस नजर बचाना चाहता था, सबको मालूम है पतरस का बोट खाली है. Everybody. Now Peter is trying to hide face. It's like, yeah. And everybody, ये लगता है पीटर का बोट एम्प्टी है, देखना ये कुछ दिख रहा नहीं है, तो वो कुछ दिख रहा है क्या? ना थोड़ा नजदीक लेना, जाके देखते. Don't be satisfied. This one man, Peter, Jesus is like, after He has spoken half an hour to everybody, I don't know how many hours it was, I'm just assuming half an hour, because we have people who are used to half an hour meetings, you know. So, thoda, you know, यीशु मसीह, and Jesus is going on and on and on teaching this subject के बाद वो subject के बाद ये subject, heaven हो गया, hell हो गया, dreams हो गया, visions हो गया, healings हो गया, सब यीशु मसीह सब सिखा रहा है एक एक करके. ले जल्दी करो यार. Every minute I am here, people know I have failed. Can I make a dangerous prayer for you? May the Lord expose your weaknesses. See, I know why you're not saying amen. Listen, once He exposes your failures, there is nothing else to do but to make you rise above them. वो एक बार फटका देगा तेरे को. He will let you fall. He'll not let you die though. And then if you surrender, you know where things changed for Peter? Where he said, yes, come, sit. If you would have said, अगर वो यीशु मसीह को बोलता, देखो टाइम नहीं है, जाल धो के हो गया, मैं जा रहा है, किसी और का बोट देख लो, that would have been over. That would have been over. That Peter went home that day. He was not satisfied with the miracle. And that is why he left everything that was miraculous. And he followed after the miracle maker. Because what he understood is, if he can do this with my situation,
what else and what more will he do with me? See, I know why it claps a little, because I am not talking about your situation now. Most of us, we want God to do something about our situation. Lord, fix my situation. But the Lord is more interested in you than your situation. इसके लिए आप देखो, मिरेकल मीटिंग, हीलिंग मीटिंग बोले तो लोग भर भर के आते, बड़ा बड़ा काम भी होता, उसके बाद वो मिरेकल पुराना हो जाएगा, वो मिरेकल एक याद बन के रह जाएगा, वो मिरेकल के साथ गाड़ देंगे उसको. But if you can leave behind one miracle, he will make you a miracle maker. From a failed fisherman to the one who says, you are Christ. Can you see the change in the man's understanding? If I can never be satisfied, if I cannot be satisfied, if I refuse to be satisfied with a miracle, with one sign, with one vision, there is a whole lot of understanding that the Lord wants to impart. Don't put a limit. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Don't put a limit. Do you think David had the strength to kill a bear? Which man can hold a lion by his jaws and tear the lion apart? Which man? Hey, Samson did not do that. Huh? Did Samson do that? At the most Samson did was, he held the foxes together and put their tails on fire. Foxes, they weigh 100 grams. Maybe more, but I'm just telling you. But what did he hold? Foxes. But here, and Samson had strength. Who was David? One shepherd boy. But what David understood is, hey, I am in the role that my God also enjoys. He understood that being a shepherd was not just my role, this is the role God enjoys. And that is why he writes, the Lord is my shepherd. See, do you think he wrote it because he was a shepherd? Or do you think he became a shepherd because he understood? May you increase in understanding in Jesus' name. Hey, I hope you were blessed. Do share some love by leaving a comment and liking the video. And don't forget to subscribe to share this video with your beloved. God bless.